Good morning. How are you, students? Today we are going to study about the topic of our trigonometry. You know it's very well that trigonometry is a very important topic for high school and intermediate level. We should study about the foundation of trigonometry. आज हम लोगों को ये सीखना है कि trigonometry के आधारभूत ढांचे क्या है, कहां से हम किसी त्रिकोणमिति को शुरू करें. How can we start to study about the trigonometry? If we want to study about the trigonometry, then first we should know about the topic of the trigonometry. That is given as the trigonometry which is known as in Hindi, that is the त्रिकोणमिति. Dear student, you can observe it that it is written as the त्रिकोणमिति. We are going to study about that topic, that is the त्रिकोण. एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे where we find the three angles. तीन कोण होंगे और उनका हम अध्ययन करेंगे. अगर हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, किसी भी राइट एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर राइट एंगल कॉन्सेप्ट की बात करें तो राइट एंगल कॉन्सेप्ट हमारा है क्या? We should hear that it is an right angle triangle which is given as in the form of ABC. Right angle triangle. There is a question that which triangles are right angle triangle. We should know about that. If any triangle is given here and one of the angle is the 90 degree, then it is known as the right angle triangle. Right angle triangle, we should know that if here is an angle, then it is known as the base, and in front side of the right angle, it is known as the hypotenuse. And one of this is the perpendicular. हिंदी में इसको हम आधार, कर्ण और लंब के नाम से जानते हैं. Now, what is the use of right angle triangle in the trigonometry? If you find the right side of it, you can calculate. Base side up, you can calculate. When you want to calculate the diagonally, then you should find this angle. And there is the some trigonometrical ratio. कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिससे हम इस चीज की स्टडी कर सकते हैं. बट फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द पैथागोरस थ्योरम. I hope that you will know this topic previously from class 6th, 7th, 8th. That what is the Pythagoras theorem? We should know about that the in front side of the right angle triangle, where is the 90 degree angle, front side is known as the hypotenuse. So we can say that the square of hypotenuse is equal to the square of some other two sides sum. Yeah, we can say that hypotenuse square is equal to the perpendicular square plus base square. H square is equal to the P square plus B square. H is known as the hypotenuse, P is known as the perpendicular, and B is known as the base square. This is known as the Pythagoras theorem. In Hindi we can say that किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है. अब हम बात करते हैं शेष अन्य दो भुजाएं क्या हैं. शेष अन्य दो भुजाएं, अगर हम कर्ण की बात कर चुके हैं तो अन्य दो भुजाएं हमारी लंब और आधार होंगी. लंब जिसको हमने परपेंडिकुलर के रूप में लिखा. अगर हम इसी चीज को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर. तो इस तरीके से हम लोग क्या जाने, हम लोगों ने सीखा कि त्रिकोणमिति में एंट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा समकोण त्रिभुज क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है.
समकोण त्रिभुज तो हमारा वो है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण कहलाएगा, बेस पे ये बेस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में इसको हम परपेंडिकुलर। इसी के रिगार्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, या इन केस वी कैन से दैट इज इट इज इक्वल टू द h स्क्वायर इज इक्वल टू द p स्क्वायर एंड b स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल, फर्स्ट वी शुड नो the about the trigonometrical ratio. There are the some trigonometrical ratio, trigonometrical ratio, trigonometrical ratio. What are the trigonometrical ratio? We should know about this, that there are the some trigonometrical ratio is known as that this is the sine, cos, tan, cot, sec and cosec. ट्रिग्नोमेट्रिकल कुल 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात पाए जाते हैं। There are the 6 type of the trigonometrical ratio which are known as the sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Now what are the sine, what are the cos, tan, cot, sec and cosec? Then there is some trick which are the, if you will take here, it is a right angle triangle, this is the theta and this is known as the A, B and C. You know here hypotenuse, perpendicular and base. We will want to find that these 6 ratio is equal to according to the side, या हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना चाहते हैं कि ये भुजाओं के आधार पे कैसे होंगे। तो we can write here is given as the theta, then we can write here sin theta. There is a question, what are the sin theta? There is a trick, we want to know about this. How can we find the sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta? There is a trick. We will say here in that पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले. We can participate this section. Pandit we can take P, Badri we can take B, Prasad we can take P. हर हर बोले H H B. This is trick to study about the trigonometrical ratio. We can say that sin theta, you will see here P and H. We write here P by H. This is given as perpendicular upon hypotenuse. This is also known as the lamb bate curve. Now cos theta. Now you can say at next step B by H. B by H. This is आधार बटे कर्व. Now next topic is tan theta. You see here P by B. This is the लंब बटे आधार. Similarly, now cot theta. Now you will move from reverse from here. यहां नीचे से शुरू करेंगे. That is the B by P. This is the आधार बटे लंब. Now sec theta is equal to the H by B. कर्ण बटे आधार. Here is the cosec theta is H by P